नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन केंद्रीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी। इससे पहले कल बजट सेशन का आरंभ हुआ था और वित्त मंत्री ने आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की, हाउस के टेबल पर रखा। उसकी कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले कि संसद आपको ले चलूं जहां वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगी। वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात कर, यह एक औपचारिकता होती है और उनसे अनुमति लेती हैं बजट प्रस्तुत करने की दृष्टि से, और वापस वो संसद भवन आती हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है जहां इस बजट को अप्रूव किया जाता है, और उसके बाद फिर वित्त मंत्री लोकसभा का रुख करती हैं जहां की इस बजट को पेश किया जाएगा, और यह लगभग 11 बजे के आसपास शुरू होगा, जैसा कि समय पहले से निर्धारित है। इसमें आर्थिक समीक्षा में कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताता चलूं। जीडीपी 8.0 से 8.5% रहने का अनुमान इसमें लगाया गया है। 2021-22 में यह 9.2% का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इस बार 8.0 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से जो दीर्घकालिक विस्तार के लिए अर्थव्यवस्था पर फोकस किया जाएगा। पूंजी व्यय में सालाना 13.5% की वृद्धि है। 31 दिसंबर तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। सरकार की ओर से आर्थिक समीक्षा में यह दावा किया गया है कि यह जो खास करके विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति है, दुनिया में चौथा देश भारत है जिनके पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। राजस्व प्राप्ति में भी भारी वृद्धि दिखाई गई है, और अगर जीएसटी की बात करें तो इसमें 67.2% का ग्रोथ दिखाया गया है। सामाजिक सेक्टर पर खर्च 8.6% हो गया है, जो कि 2014-15 में यह 6.2% था। अंतिम तिमाही यानी 2020-21 के दौरान रोजगार की संभावना बढ़ी है। सरकार की ओर से यह कहा गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में कि यह काफ़ी अच्छा संकेत है हमारी आर्थिक व्यवस्था के गतिमान होने की दिशा। निर्यात और आयात में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। कोविड से पहले की स्थिति में हम लौट रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। अब तक के जो संकेत मिले हैं खास करके रोजगार की दृष्टि से। उसके बाद 75 आईपीओ के माध्यम से सरकार ने इस दौरान 89,066 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये 10 वर्षों में सर्वाधिक है, ऐसा सरकार का कहना है। मुद्रास्फीति की बात करें तो महंगाई घटकर 5.2% रह गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि खान पान, सब्जी, तेल, उपभोक्ता सामान, पेट्रोल, डीजल, रेल भाड़ा, बस भाड़ा, ये सब काफ़ी महंगा है, क्योंकि हम और आप जब धरातल पर रहते हैं और इसका सामना हम सबको करना पड़ रहा है, और हम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सरकार की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से ये कहा गया है कि ये कम हुआ है, जो महंगाई है, मुद्रास्फीति, ये कम हुआ है, 5.2% की स्थिति है। और अगर बात करें खाद्य मुद्रास्फीति जो है, उसको भी सरकार कह रहे हैं कि औसतन यह 2.9% यानी निचले स्तर पर रहा है, और इस पर भी कंट्रोल करने की स्थिति बनी रही है, ये कह रही है सरकार। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में हैं, ये खास तौर से इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है। कृषि क्षेत्र में
3.9% की वृद्धि देखी गई है। रेलवे पर खर्च अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में तो काफ़ी लगभग डबल करने की बात कही गई है कि रेलवे पर खर्च 2020-21 में यह 1,55,181 करोड़ रुपए था, जबकि 2021-22 में इसका बजट बढ़ा दिया गया और ये लगभग 2,15,058 करोड़ रुपए, यानी 2014 की तुलना में इसमें काफ़ी वृद्धि की गई है। सड़क निर्माण की गति जो है वो ये कह रहे हैं कि इस दौरान 36.5 किलोमीटर डेली की रफ्तार से सड़क का निर्माण देश में किया जा रहा है। नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं, ये सारे मिलाकर के औसतन निकाला गया है। यानी कि सरकार ये कह रही है कि 30.4% की वृद्धि हुई है, यानी सड़कों के निर्माण की दृष्टि से देखें तो उसकी गति में। नीति आयोग का जो स्कोर बोर्ड है, जो कि ओवरऑल पूरे देश के अलग अलग राज्यों के हालात को देखते हुए, उसकी जीडीपी, उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उनके और भी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए, सोशल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र की बात है, सब मिला करके जो उसका डैशबोर्ड यानी एक डेवलपमेंट का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जो एक आकलन किया जाता है और आकलन के आधार पर उसकी रेटिंग होती है। तो उस रेटिंग में भी काफ़ी सुधार का दावा किया गया है। इसमें कई राज्यों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, तो इसीलिए ये जो स्कोर बोर्ड है नीति आयोग का, ये अब अच्छा हुआ है, यानी ऊपर आ गया है, 66 पर ये पहुंच गया है, ऐसा सरकार का कहना है। अब अगर हम आईएमएफ के अनुमान की बात करें, जो इसमें दर्शाया गया है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, 2022-23 में रियल जीडीपी 9% के आसपास रहने का अनुमान लगाया है भारत की दृष्टि से आईएमएफ ने। 2023-24 में रियल जीडीपी 7.1% रहने का अनुमान आईएमएफ ने लगाया है भारत के लिए। तो कुल मिलाकर के सरकार का ये कहना है कि अगर आईएमएफ का यह अनुमान है तो इससे साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि अगले 3 साल तक सबसे तेज गति से उभरती अर्थव्यवस्था जो है वो भारत के बने रहने का अनुमान है। ये सरकार का दावा है, ये आकलन है, और ये आईएमएफ ने जो फोरकास्ट किया है, जो भविष्यवाणी की है, एक तरह से जो अनुमान लगाया है, उसके आधार पर भारत सरकार ये कह रही है। और जो सारे इंडिकेटर्स लगभग 80 यानी 80 प्रकार के संकेत होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से मिला करके, और उसके आधार पर फिर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में ये आकलन और ये एक नटशेल में एक रिपोर्ट दी जाती है, बताया जाता है कि हमारी क्या स्थिति रही पिछले वर्षों में और आने वाले समय में 1-2 साल तक हमारी क्या स्थिति रहेगी। हालांकि कोरोना के काल में आपने देखा है कि माइनस में सारी बातें जा रही थी, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, जीडीपी की बात करें, जो हमारी इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ओसिलेट कर रही थी, हिचकोले खा रही थी। तो इस कारण से अब जो हालात सुधर रहे हैं, यानी रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए सरकार का ये अनुमान है और आईएमएफ ने अब ये फोरकास्ट किया है। अब 2020-21 में आप आगे चलें, क्योंकि सबसे अगर चिंता का विषय ये होता है कि क्या जब आपके माली हालात अगर बिगड़ जाएं और आपके पास पैसे नहीं हों तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने खर्च की दृष्टि से और जो अपनी आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताओं की दृष्टि से, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राज्य हो या फिर देश हो, तो उनकी भी आवश्यकताएं उसी प्रकार की होती हैं। उनके लिए फिर उनको कर्ज यानी बैंक का मुंह देखना पड़ता है, हमको, आपको, किसी को भी, व्यवसायी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी को भी। तो उसी तरह से केंद्र सरकार को भी कर्ज लेना पड़ता है। तो 2020-21 में जो कर्ज था, भारत सरकार का कर्ज बढ़कर अब आप देख लें कि जीडीपी का जो है वो 59.3% हो गया है, बढ़ा है, कर्ज बढ़ गया है, कर्ज घटा नहीं है, कर्ज बढ़ा है। लेकिन इसके पीछे सरकार का ये तर्क है कि कर्ज इसलिए बढ़ा क्योंकि आप जो कोरोना की स्थिति बनी उसके कारण से जो हमारा ग्रोथ रुका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे काफ़ी उसका असर पड़ा, रोजगार है, सर्विस सेक्टर है, तो एक केवल और केवल जो कृषि क्षेत्र था वही
आगे बढ़ता रहा। तो इस कारण से अब ये कह रहे हैं कि हम पर कर्ज का बोझ बढ़ा। लेकिन अगर आप 2019-20 में अगर आप देखें तो कितना बढ़ा है, ये 49.1% था कुल जीडीपी का कर्ज, और अब कितना हो गया कुल जीडीपी का, ये हो गया 59.3%। कुल मिला के लगभग अगर आप देखें तो 10% कर्ज जो है वो कुल जीडीपी का और बढ़ गया है भारत पर। तो ये, लेकिन सरकार ये कहती है कि अर्थव्यवस्था में जो उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, उस सुधार के आने से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस हालात में जो कर्ज है, इसकी ये कुल जीडीपी का जो प्रतिशत है कर्ज का, ये थोड़ा कम होगा आने वाले समय में, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा आकलन है। इस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही है सरकारी तंत्र के द्वारा, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उसके हिसाब से। कल जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्हीं सारी बातों को उन्होंने दोहराया था, खास करके रोजगार की संभावनाओं की दृष्टि से। तो सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सभी तरह के मिलाकर के जो सभी 80 इंडिकेटर्स होते हैं, 80 इंडिकेटर संकेत होते हैं, उसके आधार पर ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उसी के आधार पर सरकार अपना आकलन बनाती है, अपना आगे की दृष्टि से वो अपना जो रास्ता है वो निर्धारित करती है। तो अब अगर आप सामान्य कर्ज की बात करें तो आरबीआई का जो रेपो रेट है वो 4% पर बना रहा। ये कर्ज देने का रेट होता है आरबीआई का, दूसरे बैंकों को देते हैं, जिससे हम और आप, कोई भी व्यवसायी या कोई सामान्य आदमी कर्ज लेता है। तो ये आरबीआई का रेपो रेट 4% पर बना रहा। कर्ज देने में अगर आप देखें तो ये पहले था 5.3% के आसपास था, जो कि कर्ज देने का जो अनुपात है वो, यानी लेने का अनुपात, जो कर्ज लेने वाले हैं, यानी राशि जो कर्ज के रूप में जारी की गई है, वो बढ़कर 9.2% के आसपास पहुंच चुकी है इस दौरान। ये स्वाभाविक है, हालांकि कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज अगर प्रोडक्टिव हो, उसमें एनपीए न बढ़े, वो रुक नहीं जाए, तब माना जाता है कि विकास की गति उससे तेज होगी, डेवलपमेंट को उससे फायदा होगा, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसको गति मिलेगी। ये आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने रखा, जो बिंदुवार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आवश्यक था कि मैं आपके सामने रखूं। और इसके बाद अब क्योंकि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट प्रस्तुत करने वाली हैं, बस थोड़ी देर में हम आपको संसद की ओर ले चलेंगे। इसमें क्या कुछ फोकस हो सकता है, वो कुछ सवालात हैं जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे कि जैसे क्या टैक्स स्लैब में कुछ छूट देने की बात हो सकती है क्या, क्योंकि इस प्रकार की उम्मीद लगा रहे हैं खास जो मीडियम क्लास फैमिली, जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं या फिर जो सर्विस क्लास लोग हैं, उनके लिए, खास करके मीडियम क्लास की जो फैमिली है, वो इस चीज की उम्मीद जरूर करती है। क्या सामान सस्ते होंगे, चाहे वो खाद्य वस्तु हो, उपभोक्ता सामान हो, जो हमारे आम जीवन के उपयोग की चीजें हैं, क्या वो सस्ती हो सकती हैं, क्या उसमें से कुछ राहत मिल सकती है। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की बात करें, सीमेंट है, सरिया है, क्या ये सब कुछ सस्ते हो सकते हैं। ऑटो सेक्टर में क्या कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि रोजगार की संभावना, ऑटो सेक्टर काफी लंबे समय से बिल्कुल दबा हुआ है, मंदी का शिकार है। तो इसमें रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से क्या कुछ सरकार फोकस कर सकती है, कुछ राहत की घोषणा कर सकती है इसमें। अब टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर भी पिछले दिनों काफी हायतोबा मचता रहा है, क्योंकि जीएसटी रेट उन्होंने 12% कर दिया था, बढ़ा दिया था, उसको घटा करके वो पिछले लेवल पर ले गए हैं, 5% के आसपास ले गए हैं। अब हालांकि वो उसके लिए कमेटी उन्होंने गठित की है, आने वाले समय में उसका और रिजल्ट दिखेगा, लेकिन क्या इसमें कुछ सरकार घोषणा कर सकती है। उसके बाद कृषि क्षेत्र पर कितना फोकस होगा, क्योंकि कृषि ही क्षेत्र ही ऐसा रहा जिसने कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती दिए रहा, उसका आधार हिलने नहीं दिया। कोरोना के काल में भी 2 साल में कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार उसमें वृद्धि देखी गई। नई शिक्षा नीति लागू करने की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ह्यूज पैमाने पर आवश्यकता होगी, राज्य सरकारों को भी मदद की आवश्यकता होती है इस मामले में। तो क्या कुछ इस पर फोकस होता है, कितना आवंटन बढ़ाया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने की बड़ी आवश्यकता है इस देश में। एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो खुल तो गए हैं, इनॉग्रेशन हो भी जाते हैं, बिल्डिंग उनके पास नहीं, उनके पास और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास मशीन नहीं है, बहुत
सारी ऐसी चीजें हैं जहां उस पर फोकस करने की आवश्यकता है, और हर स्टेट में खास करके जो हेल्थ सेक्टर है उसको बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। इस पर कितना कुछ आवंटन बढ़ाया जाता है, क्या फोकस होता है, देखने वाली बात होगी। डिफेंस को लेकर के, क्योंकि डिफेंस सेक्टर से काफी डिमांड इस बार सरकार के पास रखी गई है खास तौर से, तो इस पर सरकार क्या करती है, क्या रुख अपनाते हैं, वित्त मंत्री के बजट में क्या कुछ इसमें निकलता है, वो भी देखने वाली बात होगी। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हमारा फोकस पिछले दशकों में काफी कम रहा है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से ये एक खास बात है कि इनका फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पे रहता है। इसी कारण से आपने देखा कि कोरोना के काल में जो भारत में वैक्सीन की खोज हुई और यहाँ उत्पादन शुरू हुआ बड़े पैमाने पर और विश्व स्तर पर हमने लोहा मनवाया इस चीज का, वो इसका ही रिजल्ट था। तो उस पर क्या कुछ फोकस होता है। पिछली बार भी घोषणा की गई थी कि इसके लिए अलग से एक फंड क्रिएट किया जाएगा और वो हम इस मुद्दे पर फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे। स्मार्ट शहरों को लेकर, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है प्रोजेक्ट ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ फोकस है इस बार, क्या कुछ नए शहर इसमें और शामिल किए जाएंगे, क्या होगा, ये कहना अभी ये देखना होगा। और हाई स्पीड ट्रेन भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर क्या फोकस होता है, क्या कुछ और नए एरियाज इसमें शामिल किए जा सकते हैं। गुजरात है, दूसरे और लोग अन्य जगहों पे जो पिछले पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू की गई थी योजना, अब क्या और कुछ शहरों को, कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज को इसके साथ जोड़ने की बात हो रही है क्या। 4 राज्यों में चुनाव है, जनता को कुछ राहत देते हैं क्या, क्या उस पर भी कुछ फोकस होगा, क्या ये चुनावी बजट साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर भी क्या कुछ घोषणा सरकार कर सकती है, क्या वित्त मंत्री कुछ इस पर बता सकती हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए रोजगार संभावना, क्योंकि रोजगार सबसे अधिक रोजगार अगर कहीं है तो एमएसएमई सेक्टर में है। अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो एमएसएमई को फोकस करने के लिए, इसको एनकरेज करने के लिए क्या कुछ सरकार करती है, कुछ फैक्टर्स लाती है, कुछ घोषणा करती है, क्या कुछ नए सिरे से कुछ इसमें इसको रिवाइज करने की दृष्टि से कुछ बातें सोच सकती है। खुदरा व्यापारी और दुकानदार अलग प्रकार से अपने नियम बनाने की मांग लगातार करते रहे हैं, तो खुदरा व्यापारी और दुकानदारों के लिए, क्योंकि इनको ऑनलाइन जो व्यापार अब शुरू हो गया है जबरदस्त पूरी दुनिया में, भारत में तो है ही, तो उसका असर, बुरा असर छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा है, छोटे बाजार के दुकानदारों पर पड़ रहा है। तो क्या इसको लेकर सरकार कुछ कह सकती है, कुछ उनको प्रोटेक्शन दे सकती है, कुछ ऐसी बातें कह सकती है कि नए ऐसे प्रावधान बनाए जाएं जिससे कि जो ऑनलाइन से एक सीधा कंपटीशन खुदरा व्यापारियों का हो गया है, दुकानदारों का हो गया है, उससे उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि रोजगार वहाँ भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के क्या कुछ सरकार कर रही है, क्या करेगी, इस पर भी देखना होगा। स्किल डेवलपमेंट पर इनका फोकस रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट अच्छे अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग इस मामले पर हमेशा रोते हैं कि उन्हें स्किल लेबर उनको नहीं मिल पा रहे। इसकी बड़ी कमी है हमारे भारत में। किसी भी राज्य में आप बात कर लें, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, आप महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, तो स्किल लेबर की संख्या काफ़ी कम है, स्किल प्रोफेशनल्स नहीं है। इस पर फोकस कैसे करती है सरकार और कैसे क्या कुछ रिवाइज करने जा रही है, इसको रीऑर्गेनाइज करने जा रही है, इसको भी देखना होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रोजगार बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो निर्माण का क्षेत्र है, इसमें बिल्डर्स जो हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको क्या राहत दी जा सकती है, क्योंकि इससे संबंधित जो मटेरियल्स हैं पिछले दिनों अगर देखें तो काफ़ी महंगे हुए हैं। तो उनको लेकर के क्या कुछ इनको मदद दी जा सकती है, खास करके बैंकों से कर्ज की बात की दृष्टि से भी, क्योंकि उसके बिना तो ये सेक्टर उठ नहीं सकता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों पर उनका फोकस रहेगा निश्चित रूप से। और लेकिन इसमें से निकलता क्या है ये देखने वाली बात अवश्य होगी। बहरहाल हम आपको अब थोड़ी देर में हम लिए चलेंगे संसद की ओर, जहां की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट प्रस्तुत करेंगी और उस पर देखना होगा कि क्या कुछ इसमें है, क्या फोकस करती हैं, किन क्षेत्रों पर वो फोकस करती हैं, क्या होगा, क्या उनका कहना होगा। और खास करके जो सर्विस सेक्टर है उसको लेकर के वो क्या करें, बजट शुरू हो चुका है और हम आपको अब वहाँ लिए चल रहे हैं सीधे संसद की ओर। Use of technology and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework.
The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and
and goods and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvatmala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value
to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Nirmala, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C, and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling, and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much-needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs.
This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) program with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be
built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts
have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances, crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact
with active involvement of citizens and businesses, will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business-as-usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative.
States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System, NGDRS, with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund
will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups, and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honourable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030,
an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honourable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honourable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the Union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20.
This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA, to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital, for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting
2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honourable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honourable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honourable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP,
which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech. Direct tax. Honourable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I wouldn't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honourable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honourable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person
can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is, up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1%
of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional High Court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional High Court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honourable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in such operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits
are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So, remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In Part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the Customs National Portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted
to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last two budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewellery. To give a boost to the gems and jewellery sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewellery through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewellery, the customs duty on imitation jewellery is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers.
certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel, and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff, and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitaraman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitaraman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बढ़ाते रहेंगे। खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो बात है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इसको और प्रमोट करेंगे, डीआरडीओ के साथ जोड़ेंगे। कुछ इस तरह के जो रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क्स हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्हें जोड़कर और प्रमोट किया जाएगा। पीएम आवास योजना को विस्तार देने की बात उन्होंने कही है। लगभग 80 लाख और घर बनाए जाएंगे। उसके बाद जो रेलवे की बात उन्होंने कही है, पीपीपी मॉडल जारी रहेगा और इससे काफ़ी फ़ायदा रेलवे को मिला है, इसे और प्रमोट करेंगे। स्टेशन के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात उन्होंने कही है, डेवलप करने की बात कही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे, इस पर काफ़ी फोकस है, इस पर आवंटन भी काफ़ी बढ़ाया है। 5 नदियों को जोड़ने की बात उन्होंने कही है। इस योजना को अमली जामा पहनाने पर बल दिया जाएगा
100 साल के लिए ढांचागत विकास की बात उन्होंने कही है कि हमारी जो प्लानिंग है वह अगले 100 साल के लिए जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड हो, रेलवे हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, चाहे समुद्री मार्ग हो, चाहे नदियों से संबंधित मार्ग हो या हवाई मार्ग हो या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, जितने प्रकार की चीज़ें जो हमारे जीवन को ईज कर सकती हैं, हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकती हैं, सुविधाजनक बना सकती हैं, उस पर फोकस रहेगा। यानी 100 साल के लिए पूरी प्लानिंग इनकी है। उसके बाद उन्होंने कहा पीएम ई विद्या योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 200 नए चैनल होंगे, यानी एवरी क्लास विल बी टेलीकास्टेड बाय वन न्यू चैनल। एक साल में 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया, यानी 2023 तक 25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार कर लिया जाएगा। रेलवे पीपीपी मॉडल मैंने आपको बताया, ट्रिपल पी मॉडल पर बल दिया जाएगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पर इनका काफ़ी फोकस होगा। पीएम आवास योजना में 80 लाख घर होंगे। टायर 2 और टायर 3 जो शहर हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो शहर हैं और उससे थोड़े छोटे शहर हैं, उसको और सुविधा संपन्न बनाने पर बल दिया जाएगा। इसके लिए वो सरकार को काफ़ी पैसा, राज्य सरकारों को काफ़ी पैसे देने जारी लगी। 2 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त राशि की बात कही, व्यवस्था की जाएगी, जो कि राज्यों को अगले 20 वर्षों के लिए दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री होगा, जिसमें पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान उनको बनाना पड़ेगा। पीएम ग्राम सड़क योजना पर वो इस पैसे को खर्च कर सकेंगे। डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकेंगे। बिल्डिंग बायलॉज को डिजिटलाइज करने की दृष्टि से करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, उन छोटे शहरों में जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, उसको इन्हेंस करने की दृष्टि से वो काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा 60 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का वायदा, यानी 60 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित की जा सकेगी। ये बहुत बड़ी बात है जिसको उन्होंने कहा है, और ये एक लोगों को बिल्कुल एक स्वप्न जैसा लग रहा होगा इस बात को सुनकर। ये सही भी है, क्योंकि अब तक जो पिछले 2 सालों में जो हालात रहे हैं, रोजगार लोगों के गए हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन अब जो सरकार कह रही है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कि रोजगार सृजन हो रहा है बड़े पैमाने पर। निजी निवेश को प्रमोट करने की उनकी योजना है। उसके बाद ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सरकार ने कहा कि इतने जो खर्च होंगे ये कहाँ से आएंगे, तो पैसे वो कह रहे हैं कि ग्रीन बॉन्ड से जुटाए जाएंगे। निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है उनके पास। मेक इन इंडिया से उन्होंने कहा 60 लाख नौकरियां सृजित की जा सकेंगी। एमएसएमई के लिए उन्होंने अलग से व्यवस्था की है, अतिरिक्त उन पर फोकस किया जाएगा। बैंक के माध्यम से उनको लोन दिलाए जाएंगे। कुछ व्यवस्था भी ईज करने की बात उन्होंने संकेत दिए हैं। आईटीआई से ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ खास आईटीआई में ड्रोन की ट्रेनिंग की दृष्टि से प्रोविजन बनाए जाएंगे, ऐसी सुविधा दी जाएगी, शुरू किया जाएगा। उसके बाद तिलहन उत्पादन पर बढ़ावा, उसकी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यह भी वित्त मंत्री ने घोषणा की है। स्टार्टअप्स के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस होगा। 12वीं तक की क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू कराई जाएगी, इस पर फोकस होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये एक पार्ट है। डिजिटल करेंसी चालू करेंगे, ये एक नई बात उन्होंने कही वित्त मंत्री ने, कि आरबीआई 2022 में ही डिजिटल करेंसी चालू करने की घोषणा कर सकती है। और कारोबार और रोजगार को डिजिटलाइज करने की दृष्टि से उस तरीके से ऐसे काम को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, खास करके कारोबार और रोजगार को और ज़्यादा गति देने की दृष्टि से। और 2022-23 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू की जाएगी। डाटा सेंटर को इंफ्रा का दर्जा दिया जाएगा। राज्यों को मजबूती देने पर बल दिया गया, जैसा मैंने पहले ही बताया कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त की व्यवस्था की गई है, जो विभिन्न मदों में निर्धारित किया गया है कि उन्हीं मदों पर वो इस पैसे को खर्च कर सकेंगे। और ऐसा कहा गया है कि अगले 20 साल तक इंटरेस्ट फ्री होगा। टैक्स सिस्टम प्रक्रिया को सरल बनाने की बात कही है वित्त मंत्री ने। टैक्स सुधार के लिए नया सिस्टम तैयार किया जाएगा। टैक्स फाइलिंग में एक खास बात यह है, खास करके छोटे दुकानदारों, बिजनेसमैन के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, या कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं उसके लिए भी जो टैक्स फाइलिंग सिस्टम है उसे सरल किया जाएगा।
और टेक्स्ट फाइलिंग में गलती सुधारने का मौका अगले 2 वर्षों तक रहेगा। यानी 2 वर्षों तक भी आप अपनी टैक्स फाइलिंग को सुधार सकते हैं। अगर कोई खामी होगी, कोई गलती होगी, कोई डाटा आपने गलत डाल दिया या कुछ आकलन गलत आपने डाला, तो उसको अगले 2 साल तक आप सुधार सकेंगे। ये एक बड़ी राहत की बात है छोटे व्यवसायियों की दृष्टि से। नहीं तो इसको लेकर के इंस्पेक्टर राज में बहुत परेशानी होती है। अब आप बात नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। आईटीआर गड़बड़ी हुई तो 2 साल तक आप सुधार कर सकेंगे। दिव्यांग जनों को कर में राहत देने की बात उन्होंने कही है। जो उनके माता पिता हैं उनको टैक्स में छूट मिलेगी। सहकारी समितियों को वैकल्पिक न्यूनतम दर ऑप्ट करने की छूट मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15% कर दिया गया है। ये एक बड़ी बात है। और न्यू अपडेटेड जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है वो सामने आएगा। इसको लेकर के काम शुरू किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो मैट यानी टैक्स है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी उसको अब टैक्स को मैट को 18 से घटाकर 15% कर दिया गया है। उसके बाद इस पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जो सरचार्ज लगते थे वो 12% पहले लगते थे, इसको रिड्यूस करके कम करके 7% कर दिया गया। और इसकी सीमा जो है इनकम की 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है उसके लिए ये सरचार्ज जो घटा हुआ रेट है वो रहेगा कि 12 से 7% कर दिया गया है। उसके बाद कर्मचारियों की पेंशन जो है उस पर टैक्स में थोड़ी छूट दी गई है। दिव्यांग के माता पिता को छूट मिलेगी। एनपीएस पर टैक्स की सीमा 14% रहेगी। और उसके बाद बिजनेस की दृष्टि से अगर देखें, छोटे बिजनेसमैन जो स्टार्टअप्स हैं उसको प्रमोट करने की दिशा में भी वित्त मंत्री ने घोषणाएं की हैं। और ये अहम घोषणा मानी जा सकती है कि स्टार्टअप को टैक्स में छूट 2023 तक यानी 1 साल और जो इंसेंटिव उनको दिए जाते थे वो इंसेंटिव उनको 1 साल तक और मिलेंगे। यानी 2023 तक उनको मिलेंगे, 31 मार्च 2023 तक मिलेंगे। उसके बाद आगे जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी चर्चा इस देश में होती रही है। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में ले आया गया और इसमें इस पर 30% टैक्स देना होगा जो वित्त मंत्री ने घोषित किया है। और अगर आपको इसमें घाटा भी होता है तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, इस प्रकार का संकेत दिया गया है। दूसरी बात मैंने कही कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उस पर भी 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में 30% टैक्स होगा। और उसके बाद ये उपहार में मिली जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। तो ये रही कुछ खास बातें जो कि इस बजट में देखने को मिली, सुनने को मिली। और ये हमने आपकी सुविधा के लिए सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ड के साथ जुड़ने के लिए और लगातार लंबे समय तक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट को सीधे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको आज इस बजट पर जो विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिक्रियाएं आएंगी, चाहे वो आर्थिक विशेषज्ञ हों या फिर देश के जो चीफ एडवाइज़र हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो क्या कुछ कहते हैं। और वित्त मंत्री स्वयं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया बाहर मीडिया के सामने देंगी और संभवतः वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, कुछ चैनल्स के साथ जुड़ेंगी, तो वो भी मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूँगा। और हमारे अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं, आम आदमी क्या सोचता है, कृषि क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, प्रोफेसर क्या सोचते हैं, डॉक्टर क्या सोचते हैं, लॉयर क्या सोचते हैं, अन्य ऐसे लोग हैं जिन पर इस बजट का सीधा असर पड़ता है। वैसे तो सभी लोगों से संबंधित ये चीज़ें होती हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग इस संबंध में क्या सोचते हैं, क्या उनको कुछ राहत मिलने वाली भी है या किस प्रकार की बात वो सोच रहे हैं। क्या देश को गति देने की दृष्टि से जो टैक्स की स्थिति है उसमें वो वाकई कॉपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा संकेत उन्होंने दिया और लगातार मेजें थपथपा कर वहाँ सांसदों ने संसद में उसका स्वागत किया। वित्त मंत्री ने जो अंत में गवर्नमेंट की जो रिसीट आई है जीएसटी से लेकर के खास करके वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार कोरोना के बावजूद कैसे ह्यूज रिसीट उनको मिले हैं। तो ये एक उत्साहजनक बात है और यही आधार है केंद्र सरकार का कहने का कि जो हमारी आर्थिक गति है वो तेज होती चली जा रही है और हम अब पटरी पर वापस हमारी आर्थिक व्यवस्था
लौट रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वापस पटरी पर लौट रही है, प्रोडक्शन हमारा लौटने लगा है। तो इसीलिए विभिन्न सेक्टरों से मिले जो संकेत हैं उसके आधार पर ये बात आई है, और ख़ास करके जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, सरकार के खजाने में जो पैसे आए हैं पूरे देश से विभिन्न माध्यमों से, चाहे व्यवसाय से, इंडस्ट्री से या फिर दूसरे सर्विस सेक्टर से, तो उसको लेकर के सरकार बेहद उत्साहित है। और यही कारण है कि उन्होंने जो ग्रोथ रेट तय किया है, जीडीपी की जो रेट तय की है, वो उत्साहित करने वाली बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।